है गाइस, लोग आ चुके हैं हम लोग फिर से और एक बार रेड डेड रिडेम्पशन 2 में। तो यार ये गेम बहुत ही अमेजिंग हो रखा है क्योंकि यार मतलब मैं हमेशा ही जब इस गेम का इंट्रो करता हूँ तब मतलब हमेशा ही मैं इसका तारीफ़ ही करते रहता हूँ। तो आज भी ऐसे ही तारीफ़ ही करूँगा क्योंकि यार सच में ये गेम एक मास्टरपीस है। और हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि जो सैडी एडलर है उसने हमें एक चिट्ठी भेजा है, तो जहाँ पे उसने कहा है कि मैं वैलेंटाइन में रुकी हूँ और अगर तुम वही वाले जॉन मार्स्टन हो तो तुम आ जाना। एक्चुअली क्योंकि जॉन मार्स्टन यहाँ पे खुद का जो नाम है उसको छुपा रखा है, कुछ जिम करके नाम है उसका, और एबिगेल का और उसका बेटा का भी नाम मतलब एकदम ही छुपा दिया है। तो यह सबसे अच्छा नाम ना मतलब उसका बेटे का है, मतलब जैक का जो नाम दिया है लैंसेलॉट, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम का जो नाम होता था उस टाइम इंग्लिश में, तो उस तरह का नाम है। लाइक आई थिंक किंग आर्थर का जो मतलब स्टोरी है वहाँ से उठाया हुआ एक नाम है लैंसेलॉट। तो चलो हम लोग जाएंगे एबिगेल के पास और जाके बोलेंगे कि ऐसा ऐसा कि चिट्ठी आया है और हमें आई थिंक वैलेंटाइन जाना होगा। तो आई थिंक कि एबिगेल गुस्सा करेगी, तो देखते हैं क्या होता है। चलो Abigail. Darling John, a kind lady in the village helped me write this. She had men problems of her own, but that's a different story. Listen, I've begged you, but it don't seem to make much difference. I've tried everything I know to make you grow up. And you know I love you, but loving you means I can't watch you do this. Time after time, we've had to run because of your behavior and your decisions. We got a son. I got a son. And I love our son enough that I can't have him around while you're like this. I had so many dreams, John. I hoped you would change. We all saw what happened to them that didn't, but you... Part of you is hell-bent on ending up the same way. And I love you too much to watch that no more. Abigail. Where's the wife, Milton? She's out. I saw her leaving with the boy. And the bags. What's going on? You married, Mr. Dickens? No. That don't surprise me. What'd she do? Catch you with a showgirl? Or hear about you shooting more fellas over by Strawberry? Just who are you, Jim Milton? I'm a family man. I can handle a gun, sure. Them men shot at me. Just interested, that's all. Ain't nothing interesting, unless you find gossip about a man's marriage worthy of your time. Guess not. There's work to be done, unless you're running off too. I ain't going nowhere. I'm here to work. Gotta save money, get her what she wants. What does she want? She wants a place of her own. Said she found a plot up at Beecher's Hope. You? A rancher? You'll starve. Probably. Keep yourself busy. Take your mind off it. ओके, रिटर्न टू वर्क। तो उस चिट्ठी में एबिगेल ने कहा कि यार मैं तुमको छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि यार ऐसे कितने दिन तक भागते रहूँगी, क्योंकि यार मेरे पास एक बेटा है जो कि तुम्हारा भी बेटा है, और मतलब ऐसे तुम अगर झगड़े करते रहोगे, लोगों को मारते रहोगे, तो यार कैसे एक जगह में सेटल होंगे ना। तो इनके ऊपर तो डेंजर मतलब हमेशा ही मतलब घूमता रहेगा, तो इससे उसका जो बेटा है उसको भी दिक्कत होगा। तो फॉर मतलब हिज बेटर फ्यूचर, मतलब उसका जो सन है उसका जो बेटर फ्यूचर के लिए यार जॉन को छोड़कर चले गई हो, मतलब जो कि जॉन के लिए बहुत ही दर्दनाक है क्योंकि यार बीवी छोड़कर चले। आई गेस ऐसे
नहीं जाना चाहिए था उधर, अभी मुझे मार देता। तो चलो अभी दर्द भुलाने के लिए हम लोग करेंगे बहुत ज़्यादा काम, ताकि जो काम का जो दर्द है उससे ही ये वाला दर्द मिट जाए। तो अभी क्या करना होगा, गाय से मिल्क निकलना होगा। ओके, मिल्किंग करेंगे। ओके 1 2 3, तो हो गया। और क्या, ऐसे ऐसे दिन बीत रहे और हम लोग काम कर रहे। मतलब जो जॉन है उसने एबिगेल को, एबिगेल नहीं, सॉरी, जो हमारा उस लड़की का नाम एडी सेटलर, उसके पास भी नहीं गया। That's her full. Hey, you know, I was wrong about you. Turned into a fine worker, Jim Milton. Oh, thank you. Means a lot. Hey, you think I could speak with Mr. Geddes? See if maybe he's open to offering me some guidance? I'm sure he'd be happy to hear you speak, at least. Thank you, Mr. Dickens. ओके, हम लोग गेडिस के पास जाएंगे, देखते हैं उसके पास क्या है तो कुछ ऑफर करने के लिए। कहाँ पे होगा, तो ये रहा उसका घर। देखते हैं क्या होगा, क्या ऑफर करते हैं हमें। कुछ अच्छा ही होगा, और वैसे भी बहुत ज़्यादा मंथ गुजर गए हैं। Hey, son. How's that bull? Fine, Mr. Milton. Your father in? Could I have a word? Sure, I'll just get him. Paul! I'm right here. What's the problem, Milton? Sorry for the disturbance, sir. Oh, no problem. My wife, she just began her morning discourse on the subject of my faults. Experience I think every man can relate to. In some ways, my wife also has issues with some of the decisions I've made. Real issues. Do you believe a man can change, sir? Where is this heading? Guess I don't know. I've tried to be a good hand. I've worked hard to secure your property. And for that, we are grateful. And you've paid me well besides. The thing is, I suppose, I need to get a place of my own, so I can prove to my wife that I've changed. I understand. But I ain't got much money. I ain't asking to borrow none. But maybe you could go to the bank and put in a good word so they could give me a loan? A loan, huh? So I can buy that place, Beecher's Hope? Yes, I know it. Yes, of course, sure. It'd be my pleasure. But take my advice, Milton. Take your money and go buy passage on a boat. Go to Brazil and forget all about family. I'm just joking, son. Just make sure you deal with Ansel Atherton at the bank. He's a distant cousin. Here's my name. Tell him to ask me direct himself. You'll get what you need. Thank you, sir. Yeah, I was young and dumb once, too. You'll get it back.
ओके, हम लोग आ चुके हैं यार। फिर से हम लोग अपने पुराने कैरेक्टर में लौट चुके हैं, जॉन मार्स्टन का, जो कि उसका जो सिग्नेचर ड्रेस है वो भी हम लोग पहन चुके हैं। और एक बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक हो रहा है बैकग्राउंड में, पता नहीं रहेगा भी या नहीं कॉपीराइट की वजह से। अगर रहेगा तो अच्छा है। और थोड़ा इंजॉय करते हैं यार, बाद में बात करेंगे। ओके, एक्चुअली अब मुझे बात करना चाहिए, क्योंकि मैंने जब मैप में देखा तो हम लोग जा रहे हैं लिटरली ब्लैक वाटर में, जहाँ पे जो विंडरलैंड गैंग था मतलब तबाही मचा दिया था, जहाँ पे वांटेड थे, जहाँ पे एक बार जाने के बाद यार सीधा गोली मार देते थे हमें। मतलब यार वहाँ पे घुस नहीं पाते थे आर्थर के साथ, इतना गोलीबारी करते थे यार वहाँ पे पिंकरटेंस। तो जैसे कि अभी हम लोग जॉन के साथ जा रहे हैं आई थिंक, क्योंकि जो हमारा जो विंडरलैंड गैंग है वो एक्चुअली पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ये लॉ को भी पता है, क्योंकि आर्थर मारा जा चुका है, माइका का भी पता नहीं। और जो हमारा जो डच है वो भी मतलब कहीं खो गया है। तो ये आ चुके हैं हम लोग ब्लैक वाटर में यार। आते ही ना यहाँ पे इतना गोली मारते थे, मतलब यार बहुत ज़्यादा मारते थे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मदरहुड का एक जो है ट्रॉफी या फिर अवार्ड जो भी कह लो, तो ब्लैक वाटर में आने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब बहुत ही ड्राई एरिया है यहाँ पे। मतलब उल्टे हाथ में जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो वेदर था कोल्ड था। और मतलब जो और एक लोकेशन था, उस लोकेशन का नाम तो याद नहीं आ रहा, मुझे मैप नहीं खोलना। तो उस जगह के सिवा सभी जगह मतलब जो था जो ठीक ठाक था, लेकिन ये जो ब्लैक वाटर है सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट प्लेस है इस गेम में। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो बिल्डिंग से वो बन रहे, और वो जो हम जिसके लिए काम करते थे ना उस फार्मलैंड में, तो यार उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हो यार उन्होंने। मतलब यार हमने कहा कि हमें एक लोन का बंदोबस्त कर दो, जॉन ने कहा उससे, और उन्होंने मतलब इतना अच्छा इंसान है कि यार उसने कहा कि यार मेरा नाम जाके बोलो, मेरा कज़िन वहाँ पे रहता है तो काम करते उस बैंक में, तो जाओ तो हेल्प कर देगा। तो यार मतलब अच्छा इंसान है बहुत। तो चलो जाते हैं लोन का बंदोबस्त करने। Can I help you? Yeah, I'm looking for Mr. Atherton. I'm a friend of Mr. Getty's over at Pronghorn Ranch. Oh, yeah, Mr. Atherton is in his office. Hey, please head in. Thank you. Yeah. ओके, यहाँ पे ना मेरे पास जॉन मार्स्टन का मतलब सिग्नेचर गन भी है। Can I help you? I hope so. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch, Beecher's Hope. That old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? Which folk? Mr. Getty's? I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes. Oh,
I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. ओके यहाँ पे लोन का जो मामला था वो सेटल हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि यार मतलब अप्रूव कर देंगे। यार बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है उन्होंने। तो मैप में देख लेते हैं कहाँ पे है लोकेशन। ब्लैक वाटर में कहीं होना चाहिए, इधर है हमारा फार्मिंग लैंड। तो चलो देखते हैं। और मिस्टर गेटिस का शुक्रिया यार, मुझे पता है मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यार जॉन तो नहीं बोल रहा, मुझे ही बोलना पड़ेगा। ओ यार ओ कहाँ पे है यार। एक्चुअली बात कम पड़ गया तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। कहाँ पे मतलब ऐसे ही रैंडम वर्ड्स कह रहा हूँ। यार ब्लैक वाटर को मुझे ना बहुत ही अच्छे से ना एक्सप्लोर करना है एक्चुअली। पता नहीं मैं कर भी पाऊँगा या नहीं, क्योंकि यार इस गेम का यार ये तो वही ब्लाइंड मैन है। यार हेल्प करते हैं। जब आर्थर के साथ खेलते थे तब यार मेरे घोड़ों को मार दिया उन्होंने। यार वो खुद ही मार गया। यार मैं नहीं दे पा रहा, पता नहीं क्यों। चलो चलो हुआ। Embrace those who love you, not the memory of those who pretended to. Thank you. Guess. ओके एक अच्छा बात कहा उन्होंने कि यार जो तुमसे प्यार करते हैं उनको प्यार करो, ना कि उन मेमोरीज़ को जो प्रिटेंड करते थे तुम्हें प्यार करने का। तो आई गेस अभी जिन्होंने मुझे प्यार किया है, जो कि है एबिगेल, जॉन मार्स्टन को और उसका बेटा, उसको प्यार करते हैं जॉन को। और प्यार और एक बंदा करता था जो कि है आर्थर, जो कि मर चुका है। तो वो कभी भी प्रिटेंड नहीं किया था, तो उसका बात एकदम ही नहीं कर रहा है वो ब्लाइंड मैन। हाँ लेकिन बात कर रहा है श्योरली, यू ऑल नो कि कौन है। डच, माइका, ऐसे कुछ बंदे। तो जो विंटरलैंड गैंग का जो और एक मेंबर था ना, तो जो मैक्सिकन था, प्योरली मैक्सिकन, वो बंदा भी अच्छा है एक्चुअली। हम लोग आखिर में देख सकते थे जब सभी लोग जॉन और आर्थर के ऊपर एम करके बैठे हुए, तो सिर्फ वही बंदा जो था जो एम आसमान की तरफ कर रहा था, क्योंकि यार वो रिस्पेक्ट करता था इन दोनों का और प्यार भी करता था। तो चलो आ चुके हैं हम लोग हमारा जो रैंच है उसको खरीदने के लिए। आई गेस ये कौन बंदा इस रैंच का मालिक, मतलब इस लैंड का। Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. I'm afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Some fancy Dan city boy says he owns this land. Or he's gonna. Owns it. That's what he says. Okay. And how come we live in here? I ain't sure. Get the hell out of here! This land belongs to me now! Ain't nothing on this earth belongs to no one, partner. Looks like you made your decision then, partner! Oh. यार मेरा जो है ना, मतलब You're a dead man. ऑनर है जो लो हो गया। एक्चुअली एक काम करते हैं, मुझे और नहीं लो करना। जॉन को लेकर भी मुझे हाई ऑर्डर में खेलना है, देखते हैं क्या होता है। You cut these ropes, you hear? वैसे तो जॉन जो बंदा है वो लो ऑनर का ही बंदा है। वो यार मैं क्या कर रहा हूँ ये। एक्चुअली इनको मारना ही था, लेकिन फिर भी मैं इनको नहीं मार रहा।
I'll wriggle out of this, and when I do... ऐसे भी क्या करेंगे? You just relax. I'm making some time. Ah, it's you, the man with 2 names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Mm-hmm. Now, we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton, too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations, you are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking. They own me. They just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Just joking. Well, it is you. Well, I thought you was dead, boy. Dead. Uncle? The very same. Come here. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Bull crap. No, for real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care No, of. not a problem. I'll come too. No, you don't have to. Oh, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. ओके यहाँ पे मुलाकात हो चुका है अंकल के साथ और अंकल को भी कुछ बीमारी है जिसलिए वो धीरे धीरे मौत के हाथों में चले जाएंगे जो कि बहुत ही स्लो एंड पेनफुल है। ओके आई गेस कि हम लोग जाएंगे हमारे न्यू जगह में। West. West? Oh, God, ain't you a man of few words? I can see we're headed west. You know, speaking in monosyllables don't make you seem interesting. It makes you seem stupid. I don't care how I sing. Well, now where west are we headed, you damn grunting fool? This ranch I bought just now. Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? Oh, on a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my lord. Not that that's any of your concern, but I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No. She's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. You mean she left you? Oh, I never thought she was a smart woman, but, you know, this makes me think maybe I was wrong. No more of that. I just bought this place. And you're lucky I'm showing it to you and not looking for a place to bury you out here.
ओ यार अंकल बहुत ही गंदा बक रहा है, मतलब दिमाग गरम कर देने वाला बात जो है ना, मतलब यार बकते रहता है मतलब अंकल। तो यार एबिगेल को लेकर बोल रहा है, इस रेंज को लेकर बोल रहा है, बैंक को लेकर। हाँ बैंक का बात एक सही था कि यार तुम वांटेड होकर भी भाग सकते हो, लेकिन बैंक से नहीं। ये एक सही बात कहा, सिर्फ एक ही बात कहा है सही। This is it. Look at her. ओके अब Okay. What do you think? Why exactly did you buy this dump? For Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No, I know you're an idiot. ओके हमारा जॉन आप मालिक हैं और $465 का मतलब एक लोन है हमारे पास, कैश है। तो यार पता नहीं क्या होगा यार फ्यूचर जॉन का। और यहाँ पे जो भी हो, एक अच्छा बात है कि हमें मिल चुका एक हेल्पिंग हैंड जो कि है हमारा अंकल। तो देखते हैं यहाँ पे अंकल किधर है उस घर में। तो पता नहीं वो जो पहले 3 बंदे को मारने वाला था, मैं सही कर रहा था या भी नहीं पता नहीं। मेरा तो एक तो ऑनर तो मतलब माइनस में चला गया था, पता नहीं उनको मारना सही था या नहीं, पता नहीं स्टोरी में क्या इफ़ेक्ट होगा इससे, कुछ भी पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। एक काम करते हैं। How about this, eh? How about it? Oh, all them, it's us 3 left at the inn. I heard Sadie might still be alive. Sadie? How'd you hear that? She sent me a telegram. Said she's in Valentine. Sadie sent you a telegram and you ain't paid a visit on her? What's wrong with you, man? It's been a long time. Oh, time. Sadie wants to see you. You go see her. John Marston, really? Shame on you. Don't mind me. Well, we burned the breeze long enough, I reckon. ओके यार एकदम ही यार कह दिया यार, शर्म होना चाहिए मुझे कि यार सेडी जिंदा है और मैं विज़िट नहीं किया उसको। यार था दिक्कत, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे विज़िट करता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो मैंने सोचा कि पहले यार जो पहला चीज़ है बीवी का, वो उसको ही मतलब एबिगेल का जो काम है उसको ही पहले कंप्लीट कर दिया जाए। तो यार लेकिन एबिगेल तो अब भी नहीं आई गेस कि बाद में आएगी। तो ये जो फार्म लैंड है तो दूर दूर तक यार बहुत ही मतलब बड़ा जो प्लेस है, बहुत ही ह्यूज जगह है। तो आई गेस पूरा जो ये जगह है इन दिनों मतलब कुछ दिन तक तो ये लोग सिर्फ लकड़ियों से जस्ट घिर चुके हैं, मतलब घेरे हैं इस जगह को। तो यार बहुत ही मेहनत किया है और जो पत्थर जो है चारों ओर उन सबको क्लियर आउट किया है इन्होंने, तो जो कि अच्छा बात है एक तरीके से यार, मतलब बहुत ही अच्छा बात है। तो जो भी हो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी करेंगे गेम प्ले को एंड और हम लोग नेक्स्ट वाले गेम प्ले में सैडी एडलर के साथ मुलाकात करने जाएंगे। तो चलो गेम प्ले को मैं रखता हूँ इधर ही और मैं आप लोगों से मुलाकात करूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।